Namaskar, Adab. Welcome to Alfaaz UnScripted podcast by Atom to Byte. अल्फाज अनस्क्रिप्टेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम उन प्रॉब्लम्स और उन सॉल्यूशंस को एड्रेस करते हैं जो हमारे आज के टीनेजर्स फेस कर रहे हैं। ऐसे ही इन टॉपिक्स में से जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साइबर एडिक्शन। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ उन टीनेजर्स की लाइफ को रीशेप करने में डिवोट की है। So ladies and gentlemen, please put your hands together for our mentor, Mr. Neeraj Kumar. Thank you so much, Muskan. बहुत बहुत धन्यवाद. It's always a pleasure to be the part of this team. In fact, I'm always the part of this team. So thanks for giving me this opportunity once again, so that we can think and talk about something which is quite useful for the teenagers especially. Muskan. सर, साइबर एडिक्शन एज वी नो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक बन गया है आज की जनरेशन का। सो आपके अकॉर्डिंग प्रेजेंट जनरेशन को साइबर एडिक्शन कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? Muskan, is cyber addiction, this is a very confusing word. Like if we say the cyber world where everyone is involved, right from a small child और एक छोटे बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक, हर वो इंसान आज की डेट में इंटरनेट और इस वर्चुअल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। कहीं पे ये यूजफुल है, कहीं पे यूजफुल नहीं भी है। ये जो वर्ड एडिक्शन इसके साथ जुड़ता है, दैट इज द प्रॉब्लम। समस्या यहाँ से शुरू हो रही है। नाउ वी ऑल नो, इफ यू आस्क एनीवन कि एडिक्शन क्या है, तो एडिक्शन हम सभी लोग जानते हैं एक ऐसी आदत जिसके बिना शायद रहना संभव नहीं हो, और मे बी हम उसके पीछे का रीजंस हमारा अच्छा हो या बुरा हो। सो द वर्ल्ड, द मॉडर्न द वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड्स टीनेजर, व्हाट यू से, दिस ग्रुप स्पेशली, so you can say yes, they are not dependent, they are addicted. And if you are addicted to anything, whether it is cyber addiction or any other kind of addiction you can think about, किसी भी तरह का यदि वो addiction है, that is going to be dangerous, and the same is this cyber addiction also. Somehow, very silently, but very dangerously, it has taken all the teenagers, all the young minds into its grip. And for fun, for adventure, कुछ लोग तो इसलिए भी वहाँ पे जुड़े हुए हैं, एक अजीब से ख्याल में जुड़े हुए हैं कि भाई the whole world is waiting to notice them. तो एक खुशफहमी लेके सबका सब अपना 24 घंटे का अधिक से अधिक प्रोडक्टिव टाइम अपने इसी साइबर वर्ल्ड को दे रहा है, इसी मोबाइल वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड को दे रहा है थ्रू डिफरेंट चैनल्स एंड प्लेटफॉर्म्स. सो यस, it has almost separated and on the verge of it, slowly but very silently killing the spirit and talents of the young generation. Muskan. I totally agree with you, sir. सर, तो साइबर एडिक्शन का इतना नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो आपके हिसाब से लाइफ बिफोर इंटरनेट बेटर थी या लाइफ आफ्टर इंटरनेट बेटर है, स्पेशली फॉर टीनेजर्स? इस टॉपिक पे काफी बात हो रही है. कुछ दिन पहले, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आरिफ से भी यही बात की कि इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता. यदि हम थोड़ा हिस्टोरिक टाइम्स देखते हैं तो वो भी हमको अट्रैक्टिव लगेगा. इवन बैटल ऑफ ट्रॉय एंड बैटल ऑफ फिलिपी, बैटल ऑफ कलिंगा, इनकी स्टोरीज भी हमको एडवेंचरस लगती है. उस समय के बड़े राजाओं की कहानी अच्छी लगती है. पास्ट इज ऑलवेज प्लेजरस. But yes, with the change of time, the people, the emotions, and the societying elements of the human heart, that changes, of course. समय के साथ हमारी जीवन शैली ही नहीं बदलती, बहुत कुछ बदल जाता है. और ये कुछ ऐसा बदलाव नहीं है जो डेलिबरेटली हम लोग लेके आते हैं. जैसे दुनिया बदलती है तो वो सोच बदलती है. तो उस पे अरीफ से बात हुई, उसने कहा हम लोग तो बीच वाले जनरेशन से हैं. मैंने उसको यही कहा कि सारी जनरेशन्स अपने आप को बीच में ही महसूस करते हैं, क्योंकि उनके पीछे पास्ट होता है मम्मी पापा लोग के टाइम का, और फ्यूचर होता है उनके बच्चों की शक्ल में. सो दे आर ऑलवेज द मिडिल. इन फैक्ट द वर्ल्ड इटसेल्फ इज द मिडिल ऑफ टू एंड नथिंग इज वन इज बर्थ एंड. सो एवरी लाइफ हैज इट्स ओन ब्यूटी एंड चार्म.
बट जो चेंज आया मुस्कान, वो सबसे बड़ा और ये बहुत खतरनाक है कि वी हैव स्टॉप वॉचिंग द रियल वर्ल्ड, रियल पीपल, रियल फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, पेरेंट्स। सचमुच में हम लोगों ने उनके साथ जीना, उनको देखना, उनको ऑब्जर्व करना बंद कर दिया। या ये कहते हैं इस वर्चुअल एक्सप्लोजन, वर्चुअल वर्ल्ड के एक्सप्लोजन के साथ में हमारा जो रियल फिजिकल वर्ल्ड था वो खत्म हो गया। अब खत्म हो गया तो जब तक हम किसी को देखेंगे ही नहीं, हम कभी बाहर निकल के मैदान में हर तरह के लोगों से मिलेंगे ही नहीं, हम जब इंसानों को देखेंगे ही नहीं, तो फिर इमोशंस, हमारा ह्यूमन इमोशंस कैसे आ सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। समथिंग वी हैव नॉट टेस्टेड, वी हैव नॉट सीन। व्हाट इज कंपैशन, व्हाट इज सोसाइटी, व्हाट इज helping each other, what is love? If we see this all around, maybe we'll be able to observe this. But अब एक अभी जो हमारा 21st सेंचुरी का जो वर्ल्ड है, इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने देखा ही नहीं है। राइट फ्रॉम नर्सरी अपने घर में भी वो मम्मी पापा से दूर ही रह रहे हैं। उनकी सारी की सारी दुनिया एक अजीब सा वर्चुअल वर्ल्ड वो इमेजिन करके बैठते हैं, जो होता ही नहीं है। We all will agree, like there are 10,000 friends of yours, but in fact there is no friend out of there who can come for any of your help if you are really in some distress. वो फिर उस 4,000 में भी वही 4 लोग होते हैं जो आपके रियल फ्रेंड्स भी होते हैं। तो पहले के टाइम पे ये था कि लोग मजबूरन एक साथ रहते थे, ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, लोग एक साथ टाइम शेयर किया करते थे और काफी कुछ होता था। शाम को लोग खेलने गए और गांव का टाइम था, शायद इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो वी वर फोर्स्ड टू बी टुगेदर। बट दैट बीइंग टुगेदर वाज द रीजन दैट देयर वाज अ बॉन्ड। जैसे अभी हम लोग बात करते हैं कि उस चिट्ठियों के जमाने में भी लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कोई भी बाहर जाता था उसका इंतजार करते थे। So that waiting moments and those important emotional moments, that shaped a different kind of generation. So you will say that yes, the 70s and 80s born people are a little more emotional and controlled and disciplined in the expression of their behaviors. आज की डेट में क्या है, वो खत्म हो चुका, वो है ही नहीं। उसको सोच के और कंपेयर करके कुछ फायदा नहीं। So in the absence of the existing real world, like 1990s, our travel in the train used to be a kind of a noise all around. आज की डेट में आपका आधे से ज्यादा ट्रेन भरी हुई है, खड़े लोग हैं, फिर भी कोई आवाज नहीं होती है। So everyone is lost in a kind of a virtual world, which I am also the part of that. I spent some time on that. But as you state, addiction, oh, that addiction means you are completely out of that. उसके बिना आप रह ही नहीं सकते। आपका बेस्ट फ्रेंड भी है तो भी आप सामने हर 10 मिनट के बाद कुछ न कुछ देखने की। So it's a kind of psychologist लोगों ने तो प्रूव भी कर दिया, it's a kind of disease, mental psychological disorder which is slowly shaping in the minds of the people. So this इसके पहले की दुनिया, yeah fine, it was a physical world where everything was real and scientific words में इसका आंसर देना बेहतर होगा कि वो रियल वर्ल्ड था और ये वर्चुअल वर्ल्ड है। सो यू कैन अंडरस्टैंड, लड़ाई झगड़ा प्यार सब कुछ सच में होता था, यहाँ कुछ भी सच में नहीं है। तो सच की दुनिया और झूठ की दुनिया, यही दो दुनिया का फर्क है और शायद बहुत बड़ा फर्क है। मुस्कान। डेफिनेटली सर, इंटरनेट से जितना हम ऑनलाइन कनेक्ट हुए हैं उतना ही ऑफलाइन डिस्कनेक्ट हो गए हैं। सर, जैसे हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो इंटरनेट से अनडाउटेडली टीनेजर्स पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। बट ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो उन पे, कुछ चीज़ें ऐसी है जो उन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल गई हैं या इन सोसाइटी पे इन जनरल? कुछ नहीं, ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव ही है। एक कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, अप्लाइज टू ऑल द थिंग्स, एकेडमिक्स हो, आर्ट हो, बिजनेस हो, डिस्कवरीज हो, कि कुछ भी आपका स्टेबिलिटी में है तो द प्रोपोर्शन ऑफ गुडनेस इज ऑलवेज मोर देन इट्स डिमेरिट्स। It's impossible. If the world is existing, that means the good people are more in proportion than the bad people.
So if this technology has drawn all the traction from the best brains of the world, obviously it is to its maximum, it is the best, it is good. It has brought a kind of revolution in the world of all the kinds of the people. निश्चित रूप से फिर वहां पे वही बात है कि यदि ये जरूरत है, so this is best friend, this is the best guide, best mentor, best support, best medium. But if, as I say, if it is addiction, that means we are drawn into it. So not meant for us. There comes the problem. Now coming to the best part. The best part, it has brought the whole execution of life, all the things, all the activities that you can see, like business. We can go for all the kinds of business. You can do it from the desktop of your home. You can do all the academics. Like in our time, for making a project, we needed to go for hours. आज के डेट में आपके हाथ में एक मोबाइल फोन होके आप सारा इंफॉर्मेशन घर बैठे आप ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं. For information world, like data and information, as we call as information technology, we people know it better, to support us in all the ways, it is always the best. You don't need to go to the banks, you don't need to go to the offices. So there is no pen and paper, there is no physical connectivity that is needed for all the kinds of the needful transactions, right from shopping to business and official work, academics से लेके lectures से लेके हमारे हर तरह का जो भी needful है, ने भी physical world की important चीजें हैं. यदि उसी को virtual world में लेके आते हैं, I will make it very clear कि जो हमारे बिना इंटरनेट के लिए जो हमारे लिए जरूरी चीजें थी, जिन लोगों ने उस समय पे उन जरूरी चीजों पे काम किया, वो सक्सेसफुल हुए, और जो बेकार की चीजों पे रहे, उस समय भी लोग टाइम वेस्ट करते थे, ताश खेल के, गप मार के, इधर उधर की बातें करके, मूवी देख के, उनका लाइफ में सक्सेस दूर रहा उनसे. इसी तरह से आज के डेट में भी इफ वी आर लुकिंग फॉर दिस वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, वर्ल्ड ऑफ डेटा फॉर आवर नीड्स, whatever kind of need it is, then it is wonderful resource for us. But if it is not a need and just needlessly we are spending all the time browsing through the dramatic and nonsense entertainment which has nothing in it, which does not has any authentication, oh, I hope that part is something dangerous. Otherwise, as I said, that if it is supporting our need in any way for our growth and progress, this is wonderful revolution, and I'm sure the world is working on this for this reason only. Yes, Khan. डेफिनेटली सर. सर, साइबर एडिक्शन का अगर हम टीनेजर्स की मेंटल डेवलपमेंट पे देखेंगे तो वो कैसे उनको इम्पैक्ट करता है, या जो हमारी न्यूरोलॉजिकल वायरिंग होती है तो उस चीज़ को कैसे इम्पैक्ट करता है, स्पेशली हमारे टीनेजर्स को. Very smart, and the most important question is this, मुस्कान, क्योंकि ये एक ऐसा चेंज है, एक ऐसा इम्पैक्ट है जो विजिबल नहीं है, या है भी तो हम उसको अफर्म नहीं कर सकते, हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज दैट चेंज इज फ्रॉम विद इन. So from within you have changed, then you will never notice if someone tells you that it is wrong, because आपने किसी को ideal मान लिया. Now the question is how this world is making or bringing an impact on you. As I say, that everything on our mind is the result of what we see, what people we are around with, and what we listen to. सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, आपको सूदिंग म्यूजिक सुनो आपको नींद आएगी, आप जो कि शायद यंग जनरेशन कोई भी नहीं चाहेगा, इवन आई डोंट गो फॉर दैट, किसी एक अच्छे फिलोसोफर्स की बात सुनिए, आपको नींद आएगी, इट विल सूद यू, it will feel you that you are lost somewhere. Anything sweet, just sit back before the river, you will feel like it's making you sleep. Any garden, it will feel you all comfortable. If you are sitting at the oceans, it will feel you excited. If you are in a noise, if you are talking to some violent, listening to some violent person, watching some violent movies, you see a movie full of romance, then you see the impact in the night, and you see a movie which was full of violence, like many of the ones released. No need to take the names. The world knows that.
See the impact that one night, just the impact of 3 hours which we spend in the PVRs and all. That wins our one night, and you start dreaming, and you're just violent for nothing. Your attitude, you're full of aggression. You're in a room, you're going to sleep. Your mind is full of aggression. So the same way, different kinds of followings, like somebody is following violence, someone is following something incest, someone is following something nonsense, weird jokes, all different kinds of things. So the kind of the taste they have generated, and this is a kind of an idiot box which has given everything. आपको जो चाहिए वो सब मौजूद है वहाँ पे. आप 4 वीडियोस देखिए, पांचवा आपको फीड में हमेशा वो 10 देके जाएगा. So whatever you want, you will get a lot of stuff for that. All kinds of nonsense and authenticated stuff is there. So when we spend all our time seeing all these kinds of the things, of course our thinking, our perspective, everything will be like that. हमारा attitude ही वो हमारा जो होगा दूसरों की तरफ उसका impact होगा. तो आपका जो पिछला क्वेश्चन था कि पहले के वर्ल्ड में और अभी के वर्ल्ड में क्या डिफरेंस है, तो दैट वाज दूरदर्शन सेज, और वहां पे जो भी आता था बहुत लिटरल आता था. So you will never find the people from our generation speaking something in a kind of weird address, जिसको कहते हैं एक कंटेम्पररी एड्रेस करते हुए अपने से बड़ों और सीनियर्स को कभी नहीं देखेंगे आप. हमेशा हम लोग आप शब्द का ही प्रयोग करेंगे. लेकिन आज का जनरेशन उसको थोड़ा आउटडेटेड मानता है. दे आर पुटिंग इट वेरी रैशली. Of course, the impact of what they see, because that kinds of jokes and memes are being made. तो जैसा हमारा वर्चुअल वर्ल्ड में विजुअलाइजेशन होगा उसका इम्पैक्ट होगा. और वही रीजन है कि वी फाइंड सो मेनी यंगस्टर्स with such a kind of violent and terrifying mindset that it will scare you if you think and you look at some of the media reports. So yes, this cyber world has opened all kinds of taste, and that is without any proper fee. आपको जो चाहिए फ्री में अवेलेबल है, तो आप अपने माइंड को वही फीड करते चले जाते हैं जो आपको अच्छा लगता है. यदि वो अच्छी फीलिंग्स होती है, then it takes you to a good direction, which is very rare. But यदि वो गलत है, which is negative and most attractive, that spoils. That at the end kills also. That's what is happening. Yes, sir, I totally agree with you. सर, इंटरनेट रेवोल्यूशन से जैसे हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, तो जो गेम्स हैं वो भी अब ऑनलाइन खेली जाती हैं. सो कंपेयर टू द टाइम्स बिफोर, जब हर कोई गेम ऑफलाइन या फिजिकल मोड में खेली जाती थी, डू यू थिंक कि वो चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल थी फॉर द टीनेजर्स, और जो वो आजकल ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल है? It's the same question in a new party dress. That's what I will say, and I will appreciate the question the way you have put it before me. So you're absolutely right. In fact, we are saying the same thing. Like, imagine how you can develop. If you ask someone how a match of cricket or a kind of warfare, kind of any game, Ludo, Carom, indoor, outdoor, chess, whatever you comes to your mind. So if you're playing the game, what is the benefit? They always say that brings you discipline, that makes you more confident, that develops team spirit. Now tell me how on a TV screen we can make a team which can create our emotions. सभी लोग बात करते हैं, जब कोड करने की बात करते हैं तो सब लोग हमारे शाहरुख जी का वो स्टेटमेंट कोड करेंगे, टीम बनाने के लिए ताकत के लिए नियत की जरूरत होती है. तो जब हम सामने से किसी को जानते ही नहीं है, तो कोई जब इमोशन ही नहीं है, हमारी भावना ही नहीं है, तो वो टीम स्पिरिट, डिसिप्लिन, ये चीजें कहाँ से सीख सकते हैं हम लोग? हाउ दिस वर्चुअल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ गेम्स कैन रिप्लेस द रियल गेम्स? गेम्स खेलते हैं, बाहर एक्सरसाइज होता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ऑफ कोर्स. इस पे तो कुछ भी नहीं होता है. फिजिकल, nothing we are doing, just sitting back and just getting mentally aggressive. For what? No one knows. At the end of the day, when they realize, मुझे लगता है कि उनको ताज्जुब होता होगा उन्होंने किया क्या. और mentally भी वो लग रहा है कि we are winning a game, because whenever you lose a game, you change the game. That's a simple thing. And you have always, there's not like a target. You can play as many games as possible. आपको ये मालूम है कि हम 10 गेम हार गए हैं तो मेरे पास 100 और रेडी हैं.
तो ना तो ये कॉन्फिडेंस लाता है, ना वो किलर इंस्टिंक्ट लाता है, ये कुछ भी नहीं लाता है. दैट इज द वर्स्ट शेप ऑफ द एडिक्शन. दुनिया का यदि साइबर एडिक्शन का सबसे बुरा एग्जाम्पल है तो वो ई गेमिंग है. बिकॉज दैट इज स्पॉइलिंग यू फॉर गिविंग यू नथिंग. If you are at least talking to some people and getting happy out of that, so okay. Now you are gambling on that, playing games in a hope to win crores and billions. That's again what you actually are doing is gambling. You may win one day, but at the last, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि someday Mr. X wins, someday Mrs. Y wins, but the casino wins every day. सो आप इस ई गेमिंग में आप अपना टाइम वेस्ट करिए, चाहे जितना मर्जी सक्सेस करिए, यू कैन नॉट कम आउट विद एनीथिंग. आप सब कुछ लास्ट में लूज करके आएंगे. और जो यंगस्टर्स हैं हमारे अलग अलग तरह का आज के डेट में एड्स देख के दे आर लॉस्ट ओवर देयर. सो फॉर देम दिस इज सच अ ट्रैप. इफ दे डोंट ब्रेक इट नाउ दैट विल स्पॉइल देम. वो उनके पूरे इंस्टिंक्ट और उनके कैरेक्टर को ही चेंज कर देगा. एंड एट दिस जंक्चर ऑल द यंगस्टर्स लाइक यू विल अग्री कि लाइफ में स्किल्स का इंपॉर्टेंस जितना है उससे कहीं ज्यादा कैरेक्टर का है. So it is your character that will make you establish your goals after you have done all these schools and colleges. And in the teenage, when you lose everything because you haven't faced a real crowd, you may be doing a lot with the different worlds. जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाला है, that will be a virtual world with all the avatars moving and people sitting with all that metaverse. Metaverse पे इतना रिसर्च चल रहा है. As a layman, I studied something. डर लगता है सोचने जो हम पूरी भीड़ से मेंटली जूझ रहे हैं, बट सच में जिस दिन हम सामना करेंगे it will collapse. So human man is a social animal. So what we say, this is social media, but that makes it completely unsocial. So if we are not social, we are not man. Don't mind, the human life has become just a kind of congregation of billions and billions of यूनिटरी लिविंग क्रीचर्स. वो जो एक सोसाइटी हुआ करता था, एक ग्रुप होता था, यूनिटी एंड दिस वननेस. सो दिस सोशल मीडिया और दिस साइबर वर्ल्ड और द साइबर एडिक्शन टू बी वेरी प्रिसाइज हैज somehow either killed it or it's a very close to the killing what we call as the social aspect of the human civilization, which is dangerous. If it is not stopped, we will be also like the other creatures in this world. Difference between man and other creatures will be coming to them. So स्टेक पे बहुत बड़ी कीमत है. Yes, समय के साथ काफी कुछ बदला है और बदलना जरूरी भी है, लेकिन कितना और कैसे ये सोचे बगैर then we are using a dangerous weapon without control. So having a high speed vehicle is good, but having a controlled drive is more important. So what the world should fight now, and you all are doing a noble work with this, how to drive, that is more important. If you are driving well, wonderful, welcome to Formula 1. If you are not, then you are ending your life. That's the cyber world and the cyber addiction, the scam. वेरी वेरी ट्रू सर. सर हमने अभी साइबर एडिक्शन के सारे इश्यूज तो डिस्कस कर लिए, दैट हाउ इट इज इम्पैक्टिंग द यंग माइंड्स. तो आपके हिसाब से व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन फॉर द यंगस्टर्स जिससे वो डील कर सके साइबर एडिक्शन को? ऐसे क्या चीज़ें उन्हें फॉलो करनी चाहिए जिससे वो इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं? मुस्कान, मैंने हमेशा अपने बच्चों को पिछले more than a decade now, around 2 decades, I am doing this one line message to all the children, all my loving near and dear ones. और ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये बहुत बड़े राइटर हैं जिन्होंने वर्ल्ड्स बेस्ट सेलर लिखा, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, डॉक्टर स्टीफन कवी. ये उनका स्टेटमेंट है कि दिस लाइफ बिकम्स very comfortable, easy, happy, and every ambition is achievable if person can draw those two circles. What is that? One is circle of influence and one is circle of concern. Circle of influence means the things that where you can do something, you have to do something, you need to do something. If you are a student, you have a dream. सभी को अपना एक ड्रीम होना चाहिए कि हमको अपने लाइफ में the name we have got, what we have to do with that. So हमको करना क्या, उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं, we will care about this for your studies, for your friends, for you even genuine entertainment.
If something is really important, go for it. And the bigger circle is a circle of concern. That means that's not related with you. You don't have to do anything with the world. What Bush is doing, what Obama is doing, fine, that is for some time it can be the part of your life. But just running behind the heroes and talking about the great people and doing all the nonsense talks and spending our time in thinking about all the unwanted things. तो सभी को लाइफ में इन दो चीजों का डेली बेसिस पे पर एनम बेसिस पे लाइफ के ओवरऑल कंस्ट्रक्शन की बेसिस पे ये अलग अलग रेंजेस हैं लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमको क्या करना है ऐसा कौन सा एक्टिविटीज है जो हमारे लिए जरूरी है या हेल्पफुल है और कौन सा जिसमें हम अपना टाइम एनर्जी स्पेस वेस्ट कर रहे हैं ये हमारे पूरे लाइफ का प्लान होता है द मैन हु नोज दैट is all the list of the great names we always recite and the one who does not know जो भी इन्फ्लुएंस के सर्कल में रहते हैं हमेशा अच्छा करेंगे क्योंकि वो फालतू अपना टाइम वेस्ट करेंगे नहीं और जो आपके कंसर्न के सर्कल में रहते हैं वो इन्फ्लुएंस में आ ही नहीं पाएंगे बिकॉज इट विल हैव सच अ वाइड एरिया it will be intoxicating you all the time same is with this cyber world also you decide what are the things that's going to give you peace introspect about it यूज अ डे एंड थिंक कि कौन कौन से हमारे पेजेस या चैनल्स को फॉलो करके हमको रात में अच्छा लगा मेकिंग यू मोर कॉन्फिडेंट टुवर्ड्स योर गोल मेकिंग यू मोर कंफर्टेबल फॉर योर स्टडीज एंड द नेक्स्ट डे और कौन सा आपको डिस्टर्ब करता है दिस इज इंडिविजुअल नोबडी कैन ट्रेन अस दैट इज पर्सन टू पर्सन you will have to generate your own willpower to draw this line and shut it out. If it's not needed in Instagram, even 10 million people know about you. I don't think that's going to make any difference. आज जो हमारे अंदर ये है कि more and more people should do. Like 15 days back, what I did from my list of the Facebook friends, 600 something था. अभी 145 कुछ ऐसा रह गया. I removed all that. Not the list of friends. Similarly, from my phone contacts also. Now I don't go over there. Just goes through like 10 minutes. तो आप उसको टाइम के अनुसार यदि आप चॉइस नहीं कर सकते तो आप उसको मिनिमाइज कर दीजिए आप फिक्स कर दीजिए कि आफ्टर these 60 minutes और 120 minutes maybe 3 hours बट इससे ज्यादा नहीं तो आप फिक्स कर लीजिए कि इतना टाइम आई विल बी स्पेंडिंग ऑल थ्रू दिस नॉनसेंस and rest of the time I will not even think about it. If this is the first step a person should do, then obviously all the options and priorities will start coming to us. Since we have not left our mind free even for a small fraction of time, पूरा का पूरा टाइम हम लोग सोचते चले जाते हैं कभी सोचने का मौका नहीं मिला तो इसलिए पहली बात तो ये कि जिस भी पॉइंट पे जिस भी प्रोपोर्शन पे हो सके इस यंग जनरेशन को जो ये मानता है कि he has somehow been addicted to this cyber world उसको ये करना चाहिए कि ब्रेक दिस 24 आवर्स टू योर बेस्ट कंफर्ट आप 2 घंटा ही सही लेकिन ऐसा जरूर टाइम निकालो पहले स्टेप में where you will have done this that will be the first step and then slowly everyone will come to know and understand it after that as I said आपको ये पता लगेगा सोचने का समय मिलेगा कि कहाँ पे इसकी जरूरत है कहाँ ये नुकसान है दिन ये पता लग गया then I hope the best brains from IIT is working about this metaverse I am talking about the जितने भी हमारे टॉप टाइकन्स हैं this IT world के सब लोग लगे हुए हैं virtual world is good but only this world at the cost of the real world that's making 4,000 friends very good but if the 4 friends of our real world come to us sacrificing for few hours from them that is also needed ये जरूरी है हम पूरी दुनिया के लिए प्यारे हो अच्छी बात है पर मम्मी पापा भैया भाभी के लिए भी प्यारे हो ये जरूरी है the message is very clear Muskan it's not bad to be part of the virtual world but it's really dangerous to be lost in the virtual world on which one day we forget everything if you realize the person forgets even himself. That is the dangerous thing. I hope everyone realizes what is needed is a small willpower and a decision. अच्छा वो बहुत हो गया यहाँ से बाहर लौटते हैं पुराने दोस्तों को इकट्ठा करिए मैदान में जाइए गप करिए
किसी का स्कैंडल डिस्कस करिए, have some fun, have a good laughter. Can a person on the screen laugh for 60 minutes continuously? I hope no, but with friends, this can happen the whole night. That's the difference between the two worlds. So, disconnecting from the real and getting lost, that is what is addiction, and that's very bad. We must stop it, and stopping this is very easy. Now we all know that. Namaskar. That's very true, sir. उन सारे टीनेजर्स के लिए हुआ addicted to internet, it's not too late. अभी भी there are a lot of ways जिससे वो अपने आप को addiction से बाहर निकाल सकते हैं. So that would be all, sir. It was an amazing session with you, and we Thank you learned so a lot much. from you, sir. Thank you so much, sir, for your time. It was pleasure. This talking to the teenagers and this young brigade always coming on this platform and being with you. As I said, I never grew up after I left the college because I am always with the young mind and someone who really want to do something great, something different. Thank you so much, Mr. And thank you so much, Thank you Captain. so much, sir.